एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशंस. नाउ व्हाट अबाउट जब आपके पास नाउन प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे में भी बाद में आने वाला जो वर्ब है दैट मस्ट बी अगेन इन द जीरंड फॉर्म. सो लुक एट द एग्जांपल ऑफ दोज नाउन प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन जिनके बाद आने वाला वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन द जीरंड फॉर्म. सो दिस इंक्लूड चॉइस ऑफ, excuse for, intention of, method for, possibility of, reason for, method of. So in noun preposition combinations के बाद आने वाला verb भी gerund form में ही होगा. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. George has no excuse for dropping out of school. For dropping out of school. So again, this is a word, it's a noun preposition combination again followed by gerund verb form. There is a possibility of acquiring this property at a good price. So possibility of is followed by a gerund verb form. There is no reason for leaving this early. So this is a noun preposition combination followed by a gerund form of verb. Connie has developed a method for evaluating this problem. So method for is a noun preposition combination. By now आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी preposition आ गया है उसके बाद फ़ौरन आने वाला जो verb है that will be in the verb in the gerund form. नाउ सो फार हमने स्टडी किया कि आपके पास अगर वर्ब preposition हो, नाउन preposition हो या एडजेक्टिव preposition हो. सो व्हाट अबाउट इफ एनी टाइम यू हैव ओनली preposition which is followed directly by a verb, then verb will again will always be in the gerund form. For example, after leaving the party, this after is again we know by now is a preposition. So after leaving the party, Ali drove home. So the verb right after preposition the verb is in the gerund form. He should have stayed in New York instead of moving to Maine. So this of is again preposition followed by a verb in the gerund form. Now we spoke about those verb, adjective and noun with prepositions or preposition alone. अब हम स्टडी करेंगे उन लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स को which are always followed by infinitive form of verb and again never by the gerund form. So यहाँ पे इसको हाईलाइट करने का मकसद ये कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इन एडजेक्टिव्स के बाद आने वाला जो वर्ब होगा दैट विल ऑलवेज बी इन्फिनेटिव और आपने उसको जीरन नहीं मेंशन करना. तो अगेन पॉज योर वीडियो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स. अब हम पहले इन एडजेक्टिव्स को स्टडी करते हैं. द लिस्ट इंक्लूड्स एंशियस, boring, dangerous, hard, eager, easy, good, strange, pleased, prepared, ready, able, usual, common, difficult. These are the list of adjectives जिनके बाद आने वाला जो verb है that will be infinitive form. एक और important चीज़ है वो regarding है able. हमने इसको इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करके highlight किया है but we'll speak about it in a while. अब हम पहले इनके examples को study करते हैं. Muhammad is eager to see his family. So the word adjective eager is followed by an infinitive verb form to see. It is dangerous to drive in this weather. So the adjective dangerous is followed by a verb in the infinitive form which is to drive. We are ready to leave now. So the ready adjective is followed by a verb in the infinitive form which is to leave. It is difficult to pass this test. So difficult is followed by infinitive verb form. It is uncommon to find such good crops in this section of the country. So the word uncommon is followed by infinitive verb form. Ritsko was pleased to be admitted to the college. Again this is infinitive verb form. So again आपको ये बात बताना मकसूद है कि इन adjectives के बाद आने वाला जो verb है that will be in the infinitive form. नाउ हमने एबल को हाईलाइट किया था लास्ट लिस्ट में और हमने आपको बताया था कि हम इसको स्टडी करेंगे व्हाई इट इज़ स्पेसिफिकली हाईलाइटेड. सो एबल मीन्स द सेम एज केपेबल. हम इस दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. एबल एंड केपेबल आर यूज इंटरचेंजेबल.